BJP government is planning a multi-thousand crore birthday bash. Interestingly, of course, all acronyms have to be focused on Modi ji, so they are calling it Making of Developed India. Other words, Modi Fest. Making of Developed India is MODI. And also making all kinds of claims through an advertorial blitz. On the one hand, this is going on. On the other, India, the youth of India, the people of India are facing a grave future, a bleak future. And today I peg it on the issue of number of jobs, job creation, or all this touting of growth, which is nothing but jobless growth. In fact, if you see the government published figures, and these are not my figures, they are not political party figures, they are government published figures. You can be only reminded of the phrase, much ado about nothing. या अगर हिंदी में कहें तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, अपनी पीठ थपथपाना, अपने आप को बधाई देना. Remember friends, in several public rallies, Mr. Modi would tell new voters each and every time that just give BJP a chance to improve their lives with new jobs. And I'll give you one of those quotations, you have many of them. 2013, 2014. One of them says, quote unquote, I can't do much about those in their 50s, but I want to transform the lives of those in their 20s who are seeking new employment, unquote. Similar quotes are there in the published BJP election manifestos and specifically in writing promising 2 crore jobs every year. This is the claim, this is the dawa, this is the false promise. Actually on the ground you are having now a pink slip season. You know, pink slips are supposed to signify termination of employment. Pink slip is an old system of saying tata bye-bye to your job. Every other day, every other quarter, alarming figures are published showing A, little or no growth or abysmal growth, and B, pink slip seasons. Take for example, it's about all across the press because the Labour Bureau has published it. In 8 labor-intensive sectors, and they are the most vital sectors of our economy, construction, FMCG, etc., etc., the growth is 1.1%. 1.1%. In numbers, it is 1.35 lakh jobs. If this is Achhe Din, then obviously the government's definition of Achhe Din is Achhe Din without jobs. I want to give you very recent history, not old history, within memory, recent past. Let's just look simply at published government figures of job creation in lakhs in the last 5-6 years. In 2010, job creation was 8.7 lakhs. In 9-10 was 8.7 lakhs. 10-11 was 9.29 lakhs. If you go from 11-12, it is 3.5 lakhs. But then it is very interesting, from 13-14, I am now taking the figure which is relevant. In 13-14, it is 4.21 lakhs. In 14-15, it is 1.35 lakhs. Remember, in 2009-10, it is 8.7 lakhs. In 14-15, it is 1.35 lakhs. And in 16-17, it is again 1.35 lakhs, more or less static. Manufacturing, construction, trade, transport, hotels, restaurant, IT, BPO. India was the toast of the globe on BPOs and IT. These are figures from these 8 or 9 core sectors. Friends, if this is the jumlebaji of this government, I want to ask a few questions through you
What is it that they are celebrating? As you know, in the next few days, we are going to fan out across the country, sector-wise, telling you on each sector. It's important to be specific. It's important to nail the lie of the government. It's important to be factual. It's important to pinpoint. We don't believe in jumlebazi, although it's very easy to avoid reality with jumlebazi. So today I am giving you this and asking you, what is it that they are celebrating? Are they celebrating joblessness or are they celebrating jobless growth? What's the point of 6% growth or 7% growth, although it is only claimed and although it is only under the new series, when admittedly the growth of sectoral employment in the 9 most vital or the 8 most vital sectors of the country is 1%. That is called jobless growth or growth without jobs. Is it this joblessness or jobless growth or unemployment which the government is celebrating? Is it the credibility of the government which shows that bank credit growth, and they're all linked, bank credit growth, which is directly linked to business growth, which is directly linked to employment growth, is the lowest at 5.3% in 16-17 in guess when? 63 years. That's not 6 years, mind you, 63 years, 6.5 decades. 5.3% in bank credit is the lowest in 16-17 in the past 63 years. The IIP data, which is the industrial data, which is the bedrock of our system of counting industrial growth, production, all this make in India you hear, all this skill India you hear. The IIP data shows flat trajectory, a flat growth line of 0.6% till January 2017, that is less than 1%, is just actually about 0.5%, 0.6%. I can only say on behalf of the Congress party that I hope the government will listen to the cries of the youth and at least out of shame do something directly to rectify this abysmal situation, except giving speeches from the podiums and misleading the country. मित्रों, संक्षेप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी व्यापक स्तर पे बधाइयों के साथ अपनी पीठ थपथपा के जश्न बनाए जा रहे हैं, हज़ारों लाखों करोड़ के जश्न वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अपनी पीठ थपथपा रही है मोदी सरकार। और इस प्रोग्राम को कहा गया है मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया, यानी मोदी MODI या मोदी फेस्ट। इसका औचित्य क्या है? लाखों करोड़ों का खर्चा, इश्तिहारों का एक आक्रमण और एक तूफान, वायदों के पुलिंदे, लेकिन सच्चाई से मीलों दूर। और जो मैं सच्चाई आपको बताने वाला हूं उससे सिर्फ 2 चीज़ें याद आती हैं कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, अपनी बधाई करके खुद खुश अपने आप होना। आपको मोदी जी के वो वाक्य सब याद हैं जो आपने 13 में 14 में सुने, प्रचुर मात्रा में सुने। कुछ कोटेशंस में आपको दोहरा रहा हूँ। आई कांट डू मच अबाउट दोज इन देयर 50s, बट आई वांट टू ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ दोज इन देयर 20s हु आर सीकिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट। उनके चुनाव के पत्र में, उनकी चुनाव घोषणा में लिखित रूप से 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष का वायदा बेशर्मी से किया गया है, बार बार किया गया है। अब सच्चाई पे चलते हैं। सच्चाई है कि आज जिसको आप विकास कहते हैं, जिसको आप विकास मानते हैं नए इंडिसेस के आधार पे और सरकार के आधार पे, 6% कभी कहते हैं, 7% कभी कहते हैं, लेकिन ये बात आधारित है कि रोज़गार का विकास 1% है। जब 1% होता है तो वो बड़ा स्पष्ट है कि बिना रोज़गार वाला विकास है। बेरोज़गारी की जो बढ़ोतरी है वो दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाली है। 8.25 लाख था 2009-2010 में नए रोज़गार जो बनाए गए। 2009-10 में 8.7 लाख,
9.25 लाख से थोड़ा सा कम। 10-11 में 9.25 लाख और 14-15 में 1.35 लाख। ये मैं आपको एब्सोल्यूट फिगर रोजगार के बता रहा हूँ। 9 लाख कहाँ और 1.35 लाख कहाँ, 8 गुना 7.5 गुना फर्क 2 वर्ष से ये चल रहा है। और ये सब संबंधित हैं, आपसी पारस्परिक संबंध रखते हैं। 63 वर्ष में सबसे न्यूनतम विकास है बैंक के क्रेडिट का, जो बैंक देते हैं, क्योंकि बिना बैंक के रुपए दिए हुए औद्योगिक विकास नहीं हो सकता, उद्योग की रफ्तार नहीं बढ़ सकती और उद्योग के रफ्तार के बिना रोजगार नहीं बढ़ सकता। 63 वर्षों में सबसे न्यूनतम दर बैंक के क्रेडिट की अगर है तो अब है 16-17 में 5.3%। औद्योगिक जो होता है प्रोडक्शन, आईआईपी कहते हैं उसको, उसका जो विकास है वो एक करीब बिल्कुल कम न्यूनतम है 0.6%, 0.6%, यानी आधा प्रतिशत जनवरी 2017 तक। हम इसलिए पूछ रहे हैं कि जुमलेबाजी ज़रूर करिए मोदी जी, दावे ज़रूर करिए, बहकाइए और बरगलाइए ज़रूर, लेकिन कृपया साथ साथ देश को ये बताइए कि आप किस चीज़ का जश्न मना रहे हैं, किस चीज़ पे अपने आप को बधाई दे रहे हैं। जॉबलेसनेस बनाने के लिए, बेरोज़गार फैलाने के लिए? क्या कोई कारण है इतना बड़ा ज़्यादा खर्चा करना? इसका आंशिक रूप से आप कम से कम रोज़गार बढ़ाने में इस्तेमाल करते। और क्या ठोस कदम आप उठा रहे हैं, कृपया देश को बताएं, जिससे रोज़गार बढ़े, औद्योगिक प्रोडक्शन बढ़े और बैंक क्रेडिट की जो दर है वो बढ़े। ये हम आपके ज़रिए पूछना चाहते हैं।